Hello, hello, and welcome back. Uh, in this video, we'll going to see the one of the a trending topic called Django. So, whenever we start to learn something new, we should know why we are learning. So, means we should have clear our why, then what, and then where. Means why we should learn Django, then what is Django, and where I can implement Django, or what are the things we can achieve by using a Django. So first of all, why Django? In market there are like uh, uh, there are platform or there are other libraries like Flask, then there is a Pyramid, and many more bootstrap application available. uh, by using that we can develop the web applications. But why Django? Because the features the features which make a Django framework very secure. It is one of the secure framework. It is fast. It is faster than other applications or other framework. Then it is fully loaded with advancement, or fully loaded with, like, you can do the multiple task authentications, administration. Then you can use multiple thing in that framework. Then scalability, you can advancedly scale. You can means add different things or different platforms on that. And the versatility. Okay, so these are the why should we learn the Django. And what is Django? As I mentioned, it is a one of the framework of web development, and where we use, like, you can use on any application, you can use as an application, you can use as a project. So if you are creating one bank page or a bank web page, you can create as a app, you can create as a project. This is a big project, you can say. If you are creating for a just give retrieving response, okay, you can create as a project or a application. So application, what is mean by application? Application means you can create a loan web page. You can create, yeah, I don't know why it is syncing every single 3 second. Just give me 30. Let's take what's happening right now. We are recommended that you wait for 30 seconds. Okay, I'll bit here. And you can means this is the sub application or sub product or sub project of a main project. So you can create a project, a bank project. So first of all, I'll go here. I'll just change and color. How can I change the color? Oh, okay, I'll just write D Django. What we're learning today? D Django. And so we'll start and we'll move forward now. So when we talk about Django, it is a web application. So web application. Okay. So the application which will produce services over a web called as web application means, like, you can go on Zomato.com and you can place a order of food. You can order a food. Then there is a Blinkit where you can go and order a grocery. There is gmail.com. It is an application to connect with other people and you can mail over there.
So it is a web application, and you use it. They provide a services, and you use that application. So it is called as a web application. Now, every web application have two component. So whenever I create, or whenever a person create a web application, it is come under two component. Like one is front end, front end, and second is back end. Okay. So what is front end? First we discuss the front end. What is front end? I'll just little bit इसको ऊपर कर लेता हूँ, and now we can see फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या आता है. We'll discuss all of the thing today, and it is little bit of introduction of a Django, but it is very necessary to understand what we learning in further series, how it is going forward. Because जब आपका पाया अच्छा होता है ना, when your base is stronger, you can build a better building or a stronger building ahead. So let's understand what is front end. So it represent what user is seeing on website. So आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो आप एक अच्छी सी इमेज देखते हो. लाइक यू वेंट ऑन अ फेसबुक पेज, तो वहाँ पे आप लॉगिन पेज देखते हो. वहाँ पे यू गेट ऑन अ फेसबुक पेज, you see a login page where you enter your username and username ID and password, and you just logged in. And after logging, you get a navigation bar, some images over there, some this is the front end of any website, and this is the front end job. Okay, we can develop the front end content by using the following technologies. So क्या क्या technologies use होती है to create a front end? These are the technologies like HTML for a front end, HTML. अभी हम सबको डिस्कस करेंगे in short. CSS, then we have a JavaScript, then we have a Bootstrap. Okay, so these are the come under what, front end. And अब आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि बैक एंड में क्या आता है फिर. What is come under back end? So I'll just move little up, and we'll see what comes under back end. So let's check. In back end, I'll just write back end. They divided into a three segment. Backend एक segment पे divide नहीं है. It's segmented into a three parts. Like one is language, what language we use. I know my writing skill are little bit doctor type, so just try to understand what I'm trying to write here. Java and Python is a language we use for a backend, and these are the three important component of a backend. Okay, so we have a language, then we have second important thing in a backend is a framework, because you cannot create everything from a core. Like कुछ तो डेवलप हो सकता है ना, मीन्स कुछ चीज़ें जो आप कॉपी कर सकते हो फ्रॉम लास्ट प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ें जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, जो आपको पसंद आ रही है कि इट इज़ वेरी यूजफुल. लाइक ये एक वेब पेज है, यू कैन सी हियर मीरो इज अ साइट विच give you access to create a web book where you can write and create your notebook and you can present it. So ये इसने create किया है, but जब create किया है, you can see some navigation bar is here, some toolbar is here. This is the again a toolbar where I can share, I can present over here. So it is created, and इसका भी कुछ framework है जो अब आप ये फ्रेमवर्क आप लाइक कॉपी कर सकते हो. यू कैन कॉपी इट बाय वेबसाइट. ओके, सो तो ये फ्रेमवर्क किसी ने तो डेवलप किए होंगे ना. तो ये फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए देयर आर
frameworks called Django. तो हम Django क्यों पढ़ने वाले हैं इसका रीजन तो आपको पता चल गया है, एंड इट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ वेब पेज. तो पिरामिड एक है, लाइक आई एम राइटिंग अ रॉन्ग pyramid, pyramid, and then we have a flask. फ्लास्क बहुत लोगों ने यूज किया होगा, एंड डी जैंगो आर, क्योंकि फ्लास्क इज वेरी इजी एज कंपेयर टू डी जैंगो. बट फ्लास्क में जो एडवांसमेंट है वो नहीं है. सेफ्टी पर्पस के लिए हम डी जैंगो यूज करते हैं, लाइक सिक्योरिटी, और यू कैन, यू हैव बेटर लाइब्रेरीज को जो कनेक्टिविटी है ना, are more in Django. So that's why we use. Then we have third part in backend is database. Okay, and database में आता है SQLite. Okay, then we have Oracle. Then we have MySQL. These are the backend we use. Now we'll discuss little bit here कि हम फ्रंट एंड में क्या करते हैं. I know it is not that important for Django, but जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, whenever you got a question in an interview, तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So try to understand. अभी एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, ये क्यों यूज किए जाते हैं? फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. फॉर दिस पर्पज ओनली, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड नाउ. ओके, सो एच टी एम एल इज नथिंग बट अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये क्या है? सो आई गो एंड राइट इट हियर. कभी कभी इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाता कभी, बट आई जस्ट राइट इट डाउन कि ये क्या है. हाइपर text hypertext markup language. Okay, this is HTML. every web application contain the HTML. जो भी आप जितने भी वेब एप्लीकेशन देख रहे हो, www जब www.com कोई भी वेब एप्लीकेशन खोले होगे, तो बिहाइंड द सीन क्या यूज किया गया है? HTML, because it is a primary skill for a web developer. Okay, and HTML is a mandatory technology for web development. As I mentioned, it is represent the structure of web application. तो जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता है HTML. नाउ द सेकेंड थिंग इज CSS. CSS का काम क्या है, एंड व्हाट इज द CSS? कैस्केडिंग. मुझे भी ये कभी कभी ध्यान में नहीं रहते. स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका फुल फॉर्म है. ओके, एंड इट इज अ ऑप्शनल टेक्नोलॉजी. HTML is like mandatory, but CSS you can add. Like CSS nothing but जो गर्ल्स होती है ना, वो मेकअप करती है ना ऊपर ऊपर, लाइक अपने तो ये मेकअप करने का किट है CSS ओनली. कि जो लिपस्टिक, पाउडर, देन दे मॉइस्चराइजर, जो कुछ भी फाउंडेशन जो ऐड करते हैं ना, इट्स ऑल कम अंडर CSS. CSS नथिंग बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSS इज टू ऐड अ स्टाइल ऑन योर HTML pages, like color, fonts, border. But it is nowadays it is widely used. Okay, so you have to remember, means keep in mind कि क्या है exactly. Now come JavaScript. JavaScript, it allow you to add a interactive web application, include the programming language. तो आप आपने you have created a एक अच्छा सा आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया, बट वो वेब पेज क्रिएट करने के बाद यू शुड हैव कि वो टॉकेटिव होना चाहिए. नहीं तो बस आपको एक वेब पेज दिख रहा है, यू कैन नॉट रीड, means you cannot put some value over there, and you cannot change that, or you cannot see the. अभी exactly मैं आपको एक बोलता हूँ कि the main objective of JavaScript is functionality of HTML page to add the dynamic nature to the HTML page. अब ये डायनामिक और स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक मीन्स जो हिल नहीं पा रहा है, लाइक वो स्तब्ध है एक जगह पे, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं.
और डायनामिक मीन्स यू कैन पुट अ वैल्यू एंड यू कैन रिफ्लेक्ट समथिंग, और उसमें से आपको कुछ तो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज डायनामिक। इंटरैक्टिव होता है, उसको हम डायनामिक बोलते हैं। सो ये डायनामिक डायनामिक जो है ना, वो देने का काम क्या करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। तो HTML मीन्स टू बी static response, and HTML HTML right now I'll just do one thing here। HTML HTML क्या करता है, सॉरी मैंने कुछ HTML is static response, okay, and HTML plus JavaScript is equal to a dynamic रिस्पॉन्स। अभी आपको मैंने जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल कि डायनामिक रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, ओके। तो एग्जांपल लेते हैं हम। एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट बनाई और उस पे हमने बस लिख दिया वेलकम टू द माय स्कूल बुक, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। बट इट इज जस्ट a single statement that I have written over there, and you can read some note over there I have written, but you cannot do anything over there. So it is not a talkative। तो ये एक क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स कौन सा हो गया, स्टैटिक स्टैटिक वाला हो गया। बट अभी मैंने क्या किया, मैंने उसी वेबसाइट पे मैंने डेट और टाइम टाइम बता दिया और यूजर नेम बता दिया, वहां पे आपको लॉग इन करने को बोल दिया मैंने। तो HTML तो है उसमें, वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। तो जो भी कुछ मैंने टाइम, तो टू डिस्प्ले द करंट टाइम वी नीड extra technology, and that technology is nothing but a JavaScript। ए अभी ये बस जावास्क्रिप्ट ही नहीं कर सकता, इट इज PHP also, it may be ASP also, it may be a JavaScript, it may be a backend, जो भी लैंग्वेज जो यूज कर सकता है, जिसको जो चाहिए, कोई डॉट नेट यूज करता है। सो इट मे बी एनीथिंग, बट वो क्या काम करता है, इट गिव यू अ डायनामिक रिस्पॉन्स। उससे यूजर जो है उसको अच्छा इफेक्ट मिलता है। एंड जब डायनामिक इफेक्ट होता है ना, तो यूजर यूजर वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अदर देन स्टैटिक, ओके। सो like you like to watch a video more than watching a image। एक PDF रीड करने को बोलूंगा ना, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। बट एक वीडियो है तो वो आपको समझा है, लाइक आई एम राइट नाउ आई एम showing you something by using a video, it will be more understandable, okay। So that's the thing. If the response is not vary time to time, if response is not vary time to time and person to person, then it is a static। So what is the definition of static? A response response not vary vary varies from time to time or and person to person, देन वो क्या है, एक स्टैटिक रिस्पॉन्स हो गया वो। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक रिस्पॉन्स, ओके, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओके। रिस्पॉन्स not vary from time to time and person to person is a static response। So एक आपने फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज ऑफ जीमेल और होम पेज ऑफ ICICI बैंक इज अ, क्या है वो, एक सिंपल सा स्टैटिक पेज है। बट इफ द रिस्पॉन्स इज वेरी टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन, देन इट इज अ डायनामिक रिस्पॉन्स। इसके अलावा क्या करते आएगा अभी हमें, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दैट varies time to time and
person to person. So what we call dynamic रिस्पॉन्स, इसको ही हम क्या कहते हैं, डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं. ओके, माय हैंडराइटिंग आई नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि एक डायनामिक और स्टैटिक में क्या है. इनबॉक्स ऑफ जीमेल हर एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर एक टाइम में वो चेंज होता रहता है. कोई ईमेल आपको अभी आया तो वो आपको रिफ्लेक्ट करता है उसमें. आपने कुछ डाला है तो आपको सेंड सेंड मैसेज में दिखेगा. स्पैम में कुछ नया मैसेज आया तो यू कैन सी एट द टाइम क्यों वो चेंज क्यों हो रहा है. और हर एक पर्सन का जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है, हर एक को अलग अलग मैसेज मेल आते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक रिस्पॉन्स. इवन अ बैलेंस पेज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक और एनी अदर बैंक, एचडीएफसी ले लो, कोई भी बैंक ले लो, तो उसका एक जो पेज है वो बैलेंस शीट अलग रहेगा. हर एक की सैलरी अलग है, हर एक की अमाउंट अलग रहेगी, हर एक का उस पेज में कुछ ना कुछ वैल्यू तो अलग रहेगी ना. सो दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक रिस्पॉन्स. नाउ हमने फ्रंट के बारे में बहुत कुछ जान लिया. नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर बैक एंड. बैक एंड में क्या होता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बैक एंड में क्या होता है, लेट्स डिस्कस. अभी आपको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट एक अंडरस्टैंडिंग में और एक लिटिल बिट क्या स्ट्रेच हो रहा है, वीडियो से लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग. ओके, सो बैक एंड में क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी टू डिसाइड व्हाट टू शो टू द एंड यूजर ऑन द फ्रंट एंड. अभी फ्रंट एंड में क्या दिखना चाहिए ये हमें पता है. ओके, back end is responsible to generate a required response to the end user which is display on front end. तो अभी आपको ये लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, तो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन सिंपल लैंग्वेज. इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू डिसाइड व्हाट टू शो ऑन फ्रंट एंड, ऑन एंड यूजर ऑन फ्रंट एंड. अभी आपको कुछ तो भी जीमेल पे बता दिया, लेकिन इन बैक एंड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स टू द एंड यूजर विच इज डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड. अभी लाइक जीमेल का पेज है, लेट मी गिव यू अ जीमेल. अरे यार ये गलत हो गया, लेट मी रिमूव. एक जीमेल वाला पेज है. ओके, तो आप लॉगिन वाले इस पे आए हो, बट लॉगिन पे कुछ दिया है उसने, यूजर पासवर्ड एंड देन देर इज अ बटन सबमिट और वॉट एवर इट इज टू लॉग इन वॉट एवर. ओके, बट इसमें उसने कुछ वैल्यूज पुट कर दी एंड ही पुट अ लॉग इन बटन. उसने पुश किया और वॉट एवर सबमिटेड, बट ये करने के बाद कुछ भी ओपन नहीं हुआ. तो यूजर विल बी अनहैप्पी कि बाबा मैंने बहुत कुछ कर लिया बट आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ वेबसाइट. तो ये काम क्या है, ये जो बिहाइंड द सीन वो लॉगिन करके आगे वाला पेज बताना, लोड करके देना, ये काम किसका है, एंड यूजर का. वो नहीं हुआ तो एंड यूजर, बैक एंड यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क. तो backend has three important component as we discussed over there: language, Java or Python or any other languages. Then we have a framework, Django, Pyramid, Flask, or there are many framework we can use, but these three are widely used. Flask and Django is mostly used. And then we have a database, SLite, Oracle, SQLite, or MySQL. Now, for backend language, Python is the best choice because following reasons: simple and easy to learn, and libraries are cosine code. Okay, and then for a framework, Django is the best choice because fast, secure, scalable. ये आप हमने डिस्कस किया है. Now, Django is the most popular web application framework for Python. Okay, Django provide built-in database which is nothing but SQLite. Django क्या provide करता है? Now it provides the इनबिल्ड database which is nothing but SQLite वो provide करता है. Okay, and which is the best choice for the database. The follow the following are the various popular web application developed by the Python and Django: YouTube, then we have a Dropbox, Quora, Instagram, Reddit, Yahoo Maps are
created by Django. ये आपको पता नहीं होगा. Okay, so Django is free. The best thing is Django is free. Django is free and open source, so you can download it from website. Go to the django.com and you can download the framework, or if you want to install, you just write on, you need to install your first Python, and then you need to use pip install and django. And if you want a different version, you can just write it equal to and write the version, you'll get it. Okay, so, and it is written into Python, written into Python. So it is one of the Python library, you can say. Okay. Then what we have, it follows the model view template, MVT architecture. कौन सा आर्किटेक्चर करता है ये फॉलो? इट इज क्वेश्चन आस्क इन इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ architecture follow by the, so it follows the model view template, MVT model. Okay, and that's it. We have covered most of thing. Now we discuss the five most important feature which is maybe asked in an interview for a. So first one is fast. Okay, Django was designed to help a developer to take an application from a concept to completion as quick as possible. So it is help you to complete the application very fastly. आपके पास बहुत सारा काम आ गया तो you can do it very fastly by using the Django, but you should have the knowledge of a Django library. Okay, and it is fully loaded. Second most important thing is fully loaded. You have the database inbuilt. There are more inbuilt function for Django that you can use. Django include the dozen of extra. You can handle a common web application task. Django takes take care of user authentication, content administration, site maps, RSS feed, and many more tasks, which is handled by Django. Then the security, the most important thing when you develop a web application. Django takes the security very seriously, and it help developer avoid many common security mistakes such as SQL injections, cross-site scriptings, cross-site request. It is it is user authentication system provide the security way to manager to user account and password. तो it give you a security. And ये जब यहाँ पे बोलने की चीजें नहीं है, when we develop a app और वेबसाइट, दैट टाइम विल डिस्कस कि सिक्योरिटी कब मायने रखती है, और आपको तब पता चलेगा व्हाट इट प्रोवाइड एज अ फीचर. ओके, देन इट गिव्स द स्केलेबिलिटी. लेट scalability, and it is one of the most asked question. Okay, this is the fourth one. ये फीचर वगैरह पूछे जाते हैं. Some of the busiest side on the planet uses the Django ability to quickly and flexible scalable to meet the heaviest traffic demand. Okay, and the fourth most important is versatile. It is very versatile like me. Kidding. But it is companies, organization, and government have used the Django to build all sort of things, from content management system to social network. Even in Instagram, they use the Django, and scientists computing platforms also use the Django. So, uh, so in this chapter, we have covered why, what, and where we used Django, and it is very important topic we cover in this thing. Like we have the introduction video on Django. You can means watch whole video. If you like it, just like it, because it is right now 2 a.m. here. And why I'm sitting that long is because in the morning, in the daytime, we have very noisy outside in my bungalow. So that's the reason I मैंने आज थोड़ा सा वक्त निकाला
एंड ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नाइट टाइम में कर रहा हूँ, बिकॉज वो हॉर्न वगैरह का बहुत ऑडियो आता है, नॉइस आता है. And if you like it, please like it and subscribe my channel, because only 5% to 10% are subscribing. And if you subscribe, it will motivate me. And even if you like it, and if you see it is important for your friend, just share with them. It will be helpful to them also, and for me also. It will be it will be motivating for me. And thanks for watching this video, and stay tuned. I'll update the next video very soon. Okay.